He has broken barriers of region, of language, of backgrounds. Someone who has such a mass appeal, जो वो कहते हैं, लोग सुनते हैं, लोग करते हैं. The connect which he has established with the people, and that stands as an inspiration for all of us. We are really, really honored, Sachin sir, to have you as our national icon. तो एक बार पुनः आप सभी की जोरदार और तहे दिल से जोरदार तालियों के बीच हम भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकॉन के रूप में सचिन सर का स्वागत करते हैं और मैं निवेदन करती हूं हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी से कि समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक एक पौधा भेंट कर वे सचिन सर का स्वागत करें. And ladies and gentlemen, we would also like to express our utmost thanks and gratitude and regards to our Honorable Commission for their unwavering support and guidance. तो मैं निवेदन करती हूँ श्री धर्मेंद्र शर्मा जी से, हमारे सीनियर डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, कि वे स्वागत करें हमारे ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी का. यह है समृद्धि, खुशहाली, ग्रीन ग्रोथ एंड हेल्थ. और अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे सीनियर डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर श्री नितेश व्यास जी से. उनसे निवेदन है कि वे स्वागत करें माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी का. और निवेदन है अब श्री मनोज कुमार साहू जी से, हमारे डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर. उनसे निवेदन कि वे माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल जी का स्वागत करें. और देवी सज्जनों, आइए इस ऐतिहासिक गठबंधन का शुभारंभ करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अपने अटूट विश्वास के साथ, ईश्वर की स्तुति, वंदना और उनके आशीर्वाद के साथ, और ज्ञान और ज्योति के प्रतीक इस दीप को प्रज्वलित कर. May I request Sachin sir to please step forward and do the honors of lighting the lamp, and requesting the Honorable Commission and all on the dais also to please join. Ladies and gentlemen, the lighting of the lamp also symbolizes, जिसे कहते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बढ़े हमारा. तो सभी की शुभकामनाओं के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, हम आज के इस बहुत ही historic moment का, this collaboration and partnership which has been just now signed between the two icons, and now celebrating it, marking it, auspicious inauguration, welcoming it with the lighting of the lamp. And we show this lamp will illuminate our path towards a more brighter and a more engaged democratic future. Thank you. और अब मैं माननीय उपचुनाव आयुक्त श्री मनोज कुमार साहू जी को आमंत्रित करती हूँ उनके स्वागत उद्बोधन के लिए. Very good morning and warm welcome to all of you. On behalf of the Election Commission of India, I extend warm greetings and a hearty welcome to Bharat Ratna Awardee Shri Sachin Tendulkar, one of the finest batsmen of the game of cricket and the youngest recipient of India's highest civilian order, that is Bharat Ratna. Sachin ji, it's an honor to have you on board as the national icon of the Election Commission of India. Thank you. So I would also like to welcome Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji, Honorable Election Commissioner Dr. Anup Chandra Pandey ji, Honorable EC Shri Arun Goyal ji. The Commission's guidance has helped us to organize this big program. I also welcome the senior DCs on dais and all senior officers and members of the ECI family,
students from different parts of the Delhi, media personnel, and everyone else present here. Ladies and gentlemen, it's a momentous occasion as Shri Tendulkar has agreed to be the national icon for ECI. We express gratitude for that. This association will surely help us to connect to the youth and urban population, and that will align seamlessly with our commitment of the ECI. Nothing like voting, I vote for you. Sachinji, your dedication, your passion, and unwavering commitment to the game of cricket have made you a role model for the millions of sports lovers, transcending boundaries and generation. As a national icon, your influence and reach will definitely and undoubtedly amplify the efforts of Election Commission of India to promote voter awareness and better participation. We look forward to your valuable contribution towards strengthening the pillar of democratic landscape. As you know, with an electorate of close to 95 crore registered voters, with socio-cultural, geographical diversities and challenges, conducting elections is a mammoth exercise that Election Commission has successfully managed over the years. The Election Commission is tirelessly working towards the identifying and bridging the gaps with knowledge and information. As we are drawing close to the parliamentary elections, our mission of no voter to be left behind is somehow affected by the concern of youth and urban apathy. Today, we all are moving one step ahead towards our commitment to address this concern of youth and urban apathy by signing this memorandum of understanding with Sri Sachin Tendulkar. Only a few individuals have garnered this level of fandom that Sachinji has. He remains a cherished figure, touching hearts across various age ranges, language, and cultural backgrounds. In India, the festive atmosphere of both elections and cricket transformed them into vibrant celebrations across the nation. As we are fast approaching the upcoming assembly elections in 5 states and the parliamentary elections, we hope to celebrate the electoral festivities with maximum participation from all sections of the society, making the elections inclusive, accessible, and participative in its true spirit. Once again, a warm welcome to Sri Sachin Tendulkar ji and the Honorable Commission and all present here as we embark on a important journey together towards a more engaged and empowered electorate. Thank you very much. Thank you very much, sir. And now, ladies and gentlemen, let's take a moment to reflect on the very significance of our democratic process. And this has been very beautifully weaved in the melodious strains of our Election Commission of India song. आपको बताना चाहेंगे कि इस सॉन्ग को लॉन्च किया गया था 13th नेशनल वोटर्स डे पर हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा, और ये गीत प्रत्येक मतदाता को समर्पित है जो अपने राष्ट्रीय कर्तव्य पर ध्यान देते हुए अपना कीमती वोट डालता है. And in this song, ladies and gentlemen, there are more than 40 celebrities and people from different walks of life who have lent their voice and their presence in the song. और हिंदी के साथ साथ इसे 12 क्षेत्रीय भाषाओं में गाया गया है. तो आइए सुनते हैं ECI सॉन्ग और इसका हिंदी वर्जन. मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता. भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में. हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है. मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए. भाव की ऊर्जा में रता है भारत, लोकतंत्र
सजा ये भारत, सबसे बड़ा त्योहार हमारा, यही कर्तव्य अधिकार हमारा। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। ना पक्षपात, ना धर्म जाति, ना कोई स्वार्थ, ना भेदभाव। हम भारत के मतदाता हैं, हम भारत के निर्माता हैं। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। कई सुरों से सजाए जनमन, कई रंगों से बना तिरंगा, कई बोलियां, कई भाषाएं, एक सूत्र में बंधी आशाएं। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। एक लक्ष्य है भारत के निर्माण का, एक वचन है सर्वधर्म सम्मान का, सर्वगुण भारत के संविधान का, वासुदेव कुटुंब के अभिमान का। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। हम पात पात, हम फूल फूल, हम एक बतियन की शाखा है। इस धरती पे मेरा भारत हम सबका ही ये राजा है। सत्यम भारत, शिवम भारत, भक्ति भारत, शक्ति भारत, रौनके बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। देवी सजनों, ये गीत एक गर्व का एहसास दिलाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम भारत के हम भाग्य विधाता हैं। तो अपना कीमती वोट ज़रूर दें भारत के लिए। एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड इनवाइट श्री अरुण गोयल जी, हमारे माननीय चुनाव आयुक्त। उनसे मैं निवेदन करती हूँ इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए। Honorable CC Shri Rajiv Kumar ji, Honorable EC Dr. Anup Chandra Pandey ji, India's pride Shri Sachin Tendulkar ji, Bharat Ratna Awardee, and friends. As all of you know, and depicted through a short movie just now, one of the priorities of Election Commission is
higher voter turnout. If we look at last 7 decades since 1951, we have improved our voting percentage from 45% to 67%. That's from 1951 to 2019. In the last general election, that is 2019, 61.5 crore people voted. We had the highest female turnout of 67.18%, and we also had the highest third gender turnout of 14.58% in the last general election. This has been possible because of various measures taken by the Commission, like assured minimum facilities at all polling booths, like clean drinking water, adequate furniture, queuing, toilets, proper lighting, volunteers to help, special facilities for people with disabilities, and the motto under which we have been working, that is making elections inclusive, accessible, and participative. Various other measures include braille signage on EVMs, braille epic cards, and also recently we have introduced postal ballots for voters with disabilities and senior citizens. We have introduced measures like pink booths to promote participation of females, PWD managed polling stations, various IT platforms with an aim to provide service to our electors at their doorstep. We have 2 basic touch points with the electors. First, at the time of registration as a voter, and then at the time of voting at polling station. We have improved on both the fronts, and we have reached this percentage. But if we analyze these numbers a bit more in detail, so when we achieved 67% for the nation, we had below average, for example, in the 50s, Bihar having 57% and Uttar Pradesh having 59%. You know, these are the 2 biggest states in terms of population. But when we go a bit deeper within each state, we see, for example, in Bihar, the Patna Sahib constituency had 45.8% voter turnout. If we look at Maharashtra, although the state had a percentage of 61% turnout, in Thane, Pune, Kalyan, it was about 45 to 49. So that's about the Bombay area or Mumbai area. If we look at Karnataka again, although Karnataka had about 69%, most of the Bangalore had 53 or 54%. If we look at Telangana, the state had 62% turnout, but Hyderabad had 44% turnout. If we look at Uttar Pradesh, the state's turnout was something like 59%, but Kanpur and Allahabad had just 51%. So now this is what we feel in terms of facilities. Of course, there's never-ending improvement possible, but somehow we have reached the plateau in terms of higher percentage achievable by improving the facilities. In spite of the good facilities, we have these low turnouts in specific pockets, which we feel is an urban apathy in terms of low voter turnout. It could be for various reasons. It could be disinterest in local political issues, busy lifestyle, anonymous nature of urban life, perceived inefficacy of the system, that the individual votes won't matter, transient lifestyles which lead to sense of impermanence and reduced investment in local politics, or culturally and demographically diverse population with diverse subgroups which require specific attention, so on and so forth. Now, our belief is that we have reached a point where, in addition to the other
measures which we have been doing. We continue with those. But we need to focus more sharply on the behavioral change. So this is a section which need to be nudged. So for that, we have India's pride, Sachin ji with us. We all know that we had the statistics where people would come to watch cricket match, but there was a different percentage which would watch only Sachin ji in action. Sachin ji's last outing on the cricket pitch at Wankhede clocked the highest television rating for any test match in those years. It amassed 17 lakh television viewership during the course of 3 days, as per some report by television agency. It was at a time when cricket ratings were falling, but Sachin's last innings managed to pull another record by doubling the average ratings. Since then, Sachin ji is an inspiring role model for both aspiring athletes and the general populace. He has strong emotional connection with the citizens of India. And that's where we feel he could be our biggest asset in nudging the urban apathy, where it's coming from, and bringing about that behavioral change. So that's India's pride, Sachin, and India's national pride is democracy, which is possible only when each citizen of India, each voter of India participates. That's the objective and motto with which we are working. And that's bringing these forces, that's how we are here today, to leverage Sachinji's appeal to bring the people who have not come forth so far or in the habit of not coming regularly to come and vote for this participatory democracy and make India world's largest democracy it already is, but we also come out with a higher turnout than ever before. With that aim in 2014, we look forward to associating with Sachinji in the coming years. Thank you. Thank you very much, sir, for your inspiring address. और अब मैं आदरणीय श्री अनूप चंद्र पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ, हमारे माननीय चुनाव आयुक्त। उनसे निवेदन है इस सभागार को संबोधित करने के लिए। आदरणीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी, आदरणीय निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल जी, इस देश की करोड़ों जनता के हृदय सम्राट, सदी के महानतम क्रिकेटर भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर जी, यहाँ उपस्थित भारत निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, उपस्थित मीडिया बंधुओं, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसमें 95 करोड़ से अधिक वोटर हैं, जहां 1 करोड़ से अधिक बूथ हैं, जहां 10 करोड़ से ज़्यादा 1 करोड़ से अधिक निर्वाचन कर्मी कार्य करते हैं और 10 लाख से अधिक बूथ हैं, ऐसी निर्वाचन पद्धति के साथ आज
इस ऐतिहासिक क्षण में इस सदी के महानतम क्रिकेटर का योग हो रहा है। सचिन जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिकॉर्ड तो आपने बहुत क्रिएट किए हैं और हम सब उसके लिए गौरवान्वित हैं। हमारी पिच भी बहुत कठिन है। मगर मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप जैसा एक महान क्रिकेटर जिसने विश्व में सब जगह अपना परचम लहराया है, निश्चित रूप से हमारे करोड़ों वोटर्स को अपना सफल मार्गदर्शन देकर उन्हें इस वोटिंग एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करेगा। लोकतंत्र में अगर भारत के इतिहास को देखें तो इन पहले चुनाव में हमारे 17 करोड़ वोटर थे। अंतिम चुनाव 2019 का, जब मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, अंतिम जो 2019 का चुनाव हुआ उस समय 93 करोड़ वोटर थे। पहले चुनाव में मतदान प्रतिशत 45% था, पिछले चुनाव में 67% था। पहले चुनाव में जिस समय हम लोकतंत्र यहाँ स्थापित हुआ, उस समय जब वोट डालने जाते थे, वोटर इलेक्टोरल रोल बनाने जाते थे, तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी थीं जो कहती थी कि अपना नाम नहीं बताएंगे, हम इसकी पत्नी हैं या इसकी बेटी हैं। और पिछले चुनाव में 21 राज्यों में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के प्रतिशत से ज़्यादा रहा। तो निश्चित रूप से इतने वर्षों की ये जो चुनाव की गाथा है, विश्व के ललाट पर इस राष्ट्र ने अपना एक उज्ज्वल प्रतिबिंब छोड़ा है। मगर इसमें अभी भी 67% वोट पड़े हैं, यानी 1/3 वोट अभी भी बाकी हैं। चुनाव आयोग जो है उसका मोटो है नो वोटर टू बी लेफ्ट आउट। एक एक वोटर पर हम प्रयास करते हैं, हर वोटर का वोट लेने की कोशिश होती है। एक चुनाव, अब गिर में एक जंगल में एक वोटर है, उस वोटर का वोट लेने के लिए 10 चुनाव कर्मी उसका वोट लेने जाते हैं। अभी मैं केरल गया था, एक बूथ मुझे पता लगा 7 वोटर हैं केवल, पूरी टीम जाती है वहां पर। ले गया था मैं अभी कुछ दिन पहले, हेलीकॉप्टर से पार्टी जाती है 4 बूथ में, गर्मी सर्दी जाड़ा बरसात। कुछ जगह ऐसी हैं जहां की चरवाहे रहते हैं, तो वोटर पता नहीं लगता कब वोट, उस समय वहां पर चारागाह यहाँ है या ऊपर है, बर्फ तो नहीं पड़ी है, टेंट में वोटिंग होती है। तो अनेक प्रकार से, मगर हम जैसे आपके यहाँ हैं कि आपने अपनी पारियों में एक एक रन बटोरा है, वैसे ही हम भी अपने इसमें अपने अभियान में एक एक वोट को बटोरते हैं। और उसके लिए अभी जैसे मेरे साथी आदरणीय अरुण गोयल जी ने कहा कि
महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनते हैं, जहां पर लगता है कि महिलाओं को कहीं पर कुछ असमंजस है आने में, तो वहाँ पोलिंग अफसर, प्रिसाइडिंग अफसर, सारे ऑफिसर्स, यहाँ तक पुलिसकर्मी सब महिलाएं होती हैं। उसे पिंक बूथ कहते हैं। ट्राइबल एरियाज में पीवीटीजी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो सबसे वल्नरेबल सेगमेंट है, वहाँ तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग पूना गए थे, वहाँ गए थे, तो जितने ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ हमने वहाँ पर मीटिंग की कि भाई आप लोग आइए और यहाँ पर प्रयास ये करें ट्रांसजेंडर्स में मैक्सिमम जो मार्जिनलाइज सेगमेंट्स हैं, जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, वहाँ हमारा प्रयास होता है कि उन्हें अधिक से अधिक लाया जाए। 80 साल से ऊपर का वोटर, कभी कभी होता है कि शारीरिक परेशानी की वजह से वोट के पोलिंग बूथ पे नहीं आ सकता, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है, आप नहीं आ सकते तो इलेक्शन कमीशन आपके घर जाएगा मगर आपका वोट लेकर आएगा। इसी प्रकार पीडब्ल्यूडीज जो हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके वोट अगर वो पोलिंग बूथ तक नहीं आ सकते तो हम जाएंगे। फौज का जवान बॉर्डर नहीं छोड़ सकता। हमारे राजदूत जो हैं और दूतावासों में जो लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, अगर वो दूतावासों के लोग अपना दूतावास नहीं छोड़ सकते तो हम पोस्टल बैलेट की व्यवस्था कराते हैं। एक एक जगह पर बॉर्डर के जवान के लिए पोस्टल वोट यहाँ से डिस्पैच होता है। तो कोई भी हम कसर छोड़ते नहीं हैं वहाँ पर ये प्रयास करने के लिए कि अधिक से अधिक लोगों को इन्वॉल्व करें। और उसी लिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम जो है स्वीप कार्यक्रम, स्वीप कहते हैं सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम। तो इससे हम जो वोटर्स की आउटरीच है उसको हम प्रयास करते हैं कि स्वीप के माध्यम से हर एक वोटर तक हम वहाँ पहुँचें, और उसके रोज़ नए नए इनिशिएटिव हम ले रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए। फिर भी अभी एक चैलेंज है, इसमें हमारे यूथ वोटर्स थोड़ा संख्या कम आती है। एक चीज़ मैं बताऊं, 67% मतदान पिछली बार हुआ। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि कंपलसरी मतदान क्यों ना करा दिया जाए, कंपलसरी वोटिंग कई देशों में है, मगर हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने कहा देखिए डेमोक्रेसी में कोअर्शन इज नॉट एन ऑप्शन। हम वहाँ पे परसुएशन से जाएंगे कोअर्शन के बजाय, और इसलिए स्वीप की एक्टिविटी, और इसीलिए आज हमने सचिन जी को ये आमंत्रित किया है कि आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे लोगों को, हमारे वोटर्स को, ऐसे वोटर जो वोट नहीं देते हैं उनको आप यहाँ पर प्रेरित करें ताकि वो यहाँ पर अगले चुनाव में और अधिक ज़्यादा संख्या में वोट दे सकें। तो ये एक आइडिया है। हमारे चैलेंजेस हैं, लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख कर वोट ज़्यादा देते हैं। यहाँ जो लोग अनपढ़ हैं, जो गांव में हैं, उनका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है और पढ़े लिखे वोटर कम वोट डालते हैं। अर्बन एरियाज़ में वोटर कम डालते हैं, अर्बन अपैथी बोलते हैं उसको। तो प्रयास यही करना है कि इन्हें भी अधिक से अधिक तक मतदान केंद्र तक पहुंचाना है, और इन चैलेंजेस को वहाँ पर ओवरकम करने के लिए, अपने लोगों को प्रेरित करने के लिए जो हमारी स्वीप स्ट्रेटेजी है, जो हमारा अभियान है, उसमें मार्गदर्शक जो हमारा मंडल है, जो हमारे एक इलेक्शन आइडल्स हैं, आज श्री सचिन तेंदुलकर जी इसमें जुड़े हैं। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, और साथ ही मैं ये आशा करूँगा कि निश्चित रूप से अगले चुनाव में और अधिक संख्या में लोग वोट डालेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और देवी सज्जनों, अभी अभी इलेक्शन कमिश्नर सर ने थोड़े से चैलेंजेस यहाँ पर हमारे सामने रखे और विशेष रूप से अर्बन एंड यूथ अपैथी टुवर्ड्स पोलिंग पार्टिसिपेशन, मतदान की भागीदारी के प्रति शहरी और युवाओं की उदासीनता। और ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग उसे लेते हैं कि छुट्टी का दिन है, चलो घर में आराम करते हैं या कहीं पर घूम आते हैं, वोट के लिए कौन करने जाए, मेरे एक वोट से क्या होता है, ये ज़्यादातर लोग सोचते हैं। पर वो भूल जाते हैं कि उनका हर एक वोट इम्पोर्टेंट है। एवरी वोट मैटर्स, एवरी वोट काउंट्स। और उनका एक वोट में भी वो शक्ति है इतिहास रचने की। तो रंगमंच के माध्यम से, नाटक के माध्यम से ये हमने एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है और इसकी तरफ अब प्रस्तुत है एक स्किट। मैं निवेदन करना चाहूँगी सचिन जी से और साथ में कमीशन से, इफ़ यू कैन बी काइंडली बी सीटेड इन द फ्रंट रो एंड वील हैव द स्किट बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। तो हमारे एनएसडी के कलाकारों के माध्यम से ये संदेश स्पेशली युवाओं को और शहरों में रहने वाले लोगों को कि आप अपना वोट ज़रूर दें। और ये स्किट जो परफॉर्म की जाएगी, इसका शीर्षक है काली स्याही। इसे परफॉर्म कर रहे हैं हमारे एनएसडी के कलाकार और इसे लिखा है आसिफ अली साहब ने, निर्देशिका है मिस साजिदा। और जैसा कि आपने अभी सुना भी कि ज़्यादातर शहरों में लोग एब्सटेन करते हैं वोटिंग का, गाँव में ज़्यादा देखा गया है। लोग खुशी से इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करते हैं, पर ये काली स्याही लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तुत है दिव्य सज्जनों, आप सभी की तालियों के बीच मैं अपने कलाकारों को, एनएसडी के कलाकारों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और पेश है काली स्याही।
ना कभी गवाना। मेरे सपने हैं, छोटी सी चाहत है, जरा सी इबादत है। मैं चाहता हूँ अपनी प्यारों संग बाहों में बाहें डाल, खुले नीले आकाश के तले ठंडी चांदनी रात में बेखौफ चल सकूं। आइसक्रीम के लिए मैं चलते अपने नन्हे बच्चों को इंडिया गेट की मनपसंद आइसक्रीम खिला सकूं। मुझे नीला आकाश चाहिए। नन्नू को नीला आकाश चाहिए, नन्नू को नीला आकाश चाहिए। दरिया तक जाती वो जो पगडंडी, दरिया तक जाती वो जो पगडंडी। सुंदर सी वो राह चाहिए, सुंदर सी वो राह चाहिए। चुटकी भर चांदनी, चुटकी भर चांदनी। तारों का साथ चाहिए, तारों का साथ चाहिए। नन्नू को नीला आकाश चाहिए, नन्नू को नीला आकाश चाहिए। जी बाबूजी। तेरे गाना बजाना बंद कर, तो जल्दी मुझे घर छोड़ दे। बाबूजी आज आप दूसरा रिक्शा देख लो, आज हमें घर जरा जल्दी जाना है, क्योंकि मुझे नीला आकाश चाहिए। ओए अरे अशोक बाबू, शर्मा जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया बताइए। आज गाड़ी कहाँ गई? अरे कल वोटिंग है ना, छुट्टी का दिन, तो मैंने सोचा गाड़ी सर्विस में दे देता हूँ। छुट्टी का दिन? अरे कल तो वोटिंग है। अरे वही तो छुट्टी है, थैंक्स टू चुनाव आयोग। तो फ्राइडे को चुनाव रखा है, सैटरडे संडे मिलकर 3 दिन की छुट्टी है। अरे नहीं, कल तो वोटिंग है। छुट्टी है भाई, छुट्टी है, कल तो छुट्टी है। चादर डाल के सो जाऊंगा, घर में रोज बनाऊंगा, चार हो गई बस हो जाऊंगा। नहीं नहीं भाई, कल छुट्टी नहीं है, कल वोटिंग है। छुट्टी है। वही मुर्गे की एक टांग। अरे वोटिंग है तो हो जाएगी, हमसे क्या। मुझे याद आया, चिकन मटन ले लेता हूँ, कल वोटिंग के लफड़े में मिले ना मिले। शर्मा जी मैं चलता हूँ, आप जाइए वोट दीजिए। हट, अजीब आदमी है, वोटिंग को कहता लफड़ा है। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो बोलो बोलो। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, बोलो बोलो। मेरे प्यारे मतदाताओं, अपने मत का प्रयोग कीजिए, अपने अपने घरों से निकलिए और अपने मतदान केंद्र में जाके अपने पसंद का उम्मीदवार चुनिए, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है, मतदाता का हथियार है। मतदान आपका अधिकार है, मतदाता का हथियार है। और जिन जिन भाइयों और बहनों ने अभी अभी अपनी 18वीं सालगिरह मनाई है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, उठो, अपने मतदान की ताकत को पहचानो और इस देश के भविष्य को सुनहरा बनाने में अपनी भागीदारी निभाओ। तो आइए हम सब मिलकर मतदान करते हैं। आओ दोस्तों। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। बिल्कुल सही, मत मेरा अधिकार है, प्रगति का हथियार है। मैं भी जाऊंगा और जोर से बटन दबाऊंगा। अरे बाबा, 80 साल से ज्यादा की उम्र हो गई है तुम्हारी, चैन से घर पे बैठकर आराम करो। क्या चाहिए तुम्हें और? मुझे क्या चाहिए? मुझे जीने का सहारा चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग मोहल्ले में रह सके, कम से कम इसका थोड़ा तो प्रबंध चाहिए। अरे घर में ना सही, गलियों पार्कों में थोड़ी सी जगह चाहिए, एक आध बेंच, छोटा सा चबूतरा, जहाँ तुम जैसे नौजवान ना सही, हम बुढ़े आपस में मिल बैठ सके, पोते पोतियों को खेलता हुआ देख सके। क्योंकि पता है,
बाहों का सहारा हो, समतल गलियारा हो, मोहल्ले के कोने में हम बूढ़ों का चौबारा हो। भाई कम से कम बुढ़ापा तो अच्छे से बीते, अकेलेपन से डर लगता है मुझे। 4 कदम तो ठीक से चला नहीं जाता, पोलिंग बूथ तक कैसे जाओगे? कह तो सही रहा है, उम्र हो गई है मेरी, कौन ले जाएगा मुझे, कैसे जाऊंगा मैं ले जाऊंगा मास्टर जी आपको। पहचाना मुझे? मैं आपका शिष्य विवेक। 5वीं तक आपने पढ़ाया था मैं, फिर आप रिटायर हो गए। आपके रिटायरमेंट में खूब रहा था मैं। और आपको एक बात पता है, भारत निर्वाचन चुनाव आयोग आपके उम्र वाले लोगों के लिए पिक एंड ड्रॉप का सुविधा दिया है। और तो जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं वो घर से भी मतदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। अरे मेरे शिष्य बुद्धू राम, तुम तो काफी बड़े हो गए हो, पहचान में भी नहीं आ रहे। पिछले महीने 18वीं सालगिरह मनाई है। ये मेरा पहला वोट है। देखिए आप मिल गए हैं, अब तो मैं अपना पहला वोट अपने मास्टर साहब के साथ ही दूंगा। आपको लेने आ जाऊंगा। विवेक का प्रथम और मेरा अंतिम वोट। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे भाई 80 का हो गया हूँ, पता नहीं अगला मौका मिले ना मिले, इसलिए आपका पहला और मेरा अंतिम वोट। हम दोनों मिलकर इस वोट को यादगार बनाएंगे विवेक। आओ मेरे साथ और आगे की कहानी बताता हूँ मैं। आओ। डैडी, डैडी। अरे भैया चौराहे पर है। थैंक यू भाई साहब। डैडी, डैडी आप यहाँ पर हैं, इस चौराहे पर? हम कब से आपको पूरी सोसाइटी में ढूंढ रहे हैं। सीरियसली आपने हमें डरा ही दिया। अरे भाई क्या हो गया, मैं ठीक हूँ, बस घर से निकलकर थोड़ा खुले में सांस लेने आ गया। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा घर। डैडी प्लीज अब चलिए भी, अपना ना सही हमारे स्टेटस का तो ख्याल कीजिए। चौराहे पे खड़े हैं आप, लोग क्या कहेंगे? और पापा प्लीज 2 घंटे में हमें निकलना है, आप जल्दी चलिए, घर पे भी कोई होना चाहिए। चलिए। अरे तो कहो ना कि घर की रखवाली को दरवान चाहिए, हो जाएगी रखवाली, जाओ। डैडी दिस इज टू मच, प्लीज 3 दिन की छुट्टी मिली है बस। डैडी प्लीज, मैं अंजू और अमित नैनीताल निकल रहे हैं। अरे कहाँ जाने की बात हो रही है महेश बाबू? हाय अशोक, क्या खरीदारी चल रही है? अरे मैंने सोचा थोड़ा चिकन मटन ले लेता हूँ, वोटिंग के चक्कर में कल दुकान खुला ना खुले। छुट्टी है, शाम को पार्टी करेंगे। भाई मैं तो अपने बीवी और बच्चों के साथ में नैनीताल निकल रहा हूँ। 3 दिन की छुट्टी में जरा फ्रेश ऑक्सीजन तो ले लूँ। कल तो वोटिंग है अंकल, आप वोट नहीं दे रहे? अरे हमारे वोट देने ना देने से क्या फर्क पड़ेगा, जिसे जीतना है जीतेगा, जिसे हारना है हारेगा। Exactly right. अरे I am also not interested in giving vote. It's just a waste of time. Same here. वोटिंग तो हमारा अधिकार है। चल जा, वो अधिकार मैंने तुझे दिया, तू चुन ले चुनना है। मुझे आपका अधिकार नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे मेरा और आपको आपका अधिकार दिया है। मैं तो बस इतना कह रहा था, वोट न देना अकलमंदी का काम नहीं है। Excuse me, एक सेकंड, आप हमें अकल मत सिखाइए प्लीज। सॉरी, आपको बुरा लगा। What sorry? वो वोट देकर फायदा है क्या? जो चुनकर आता है वो तो अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है, उन्हें कोई लेना देना है हमसे? भाई मेरा तो एक सिंपल सा फंडा है, खुद कमाओ और अपना इंतजाम खुद करो, किसी का महीना देखना पड़े। और फिर भीड़ भाड़ में लाइन में खड़े होने से बेहतर है ना घर में बैठकर आराम से पार्टी करो। भाई मैं तो जाऊंगा वोट देने, तुम्हारा को कम से कम इसी बहाने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात तो हो जाएगी मेरी। अच्छा पापा, आपसे सीढ़ियाँ तो चढ़ा नहीं जाता है, आप वोट देने जाएंगे और आपको लेके कौन जाएगा पोलिंग बूथ तक?
मैं लेके जाऊंगा इनको और वापस भी छोड़ दूंगा। अब तो चुनाव आयोग वाली भी ले जा सकते हैं इनको और वापस भी छोड़ देंगे। मत रोकिए इन्हें। तुम हो कौन भाई? तुम्हें पहली बार तो देखा है और हमें राजनीति से कोई भी मतलब नहीं है। कोई भी आए कोई भी जाए। आपके ये कह देने से राजनीति का आपको छोड़ थोड़ी ना देगी आंटी। हमारे चुने गए लोग ही मिलकर पॉलिसी बनाते हैं। उसी पॉलिसी से हमारी जिंदगी की दिशा तय होती है। आपकी सोसाइटी और आपकी जिंदगी उससे अलग थोड़ी है। सुनो, जो भी तुम्हारा नाम है हमारी बात ठीक है और समझ में भी आती है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मान लो कि मैं वोट देता हूँ तो क्या गारंटी है कि मेरा ही कैंडिडेट चुन के आएगा? आपके कैंडिडेट का तो पता नहीं। हाँ ये पक्का है, आएगा वही जिसे सब मिलकर चाहेंगे। अरे ये तो भेड़ चाल है भाई, जहाँ सब चले वहाँ आप भी चल दिए। और आई डोंट रियली केयर कोई भी आए। मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। पापा प्लीज अब चलिए। जेरी प्लीज लेट्स गो। अरे रुको रुको रुको, पहले मेरे सवाल का जवाब दो तुम लोग। पूछिए। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे पैसे वालों की सोसाइटी में। जी। तो तुम सब मिलकर हम बूढ़ों के लिए 2 बेंच क्यों नहीं लगवा देते? जेडी आप भी कमाल करते हैं। सोसाइटी के अपने प्लानिंग और रूल्स होते हैं, उससे हटकर हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। भाई हम बूढ़ों को बेंच चाहिए ही चाहिए। फिर तो कोई योजना बनानी होगी महेश बाबू। हम बूढ़ों के लिए जगह हो, ये तुम लोग चाहते हो या नहीं चाहते हो? ऑफ कोर्स डैडी, आपका इस तरह चौराहे पे खड़ा रहना भी हमें कोई अच्छा नहीं लगता। तो फिर बदलो इस सोसाइटी को और लाओ चुनकर उसे जो हम सबका ध्यान रखें और जिसकी योजना में नंदू के सपने हो और हम सबकी इच्छा। अरे विवेक जी मास्टर जी। तेरा सहारा देने मुझे ले चलो उस सोसाइटी में। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं निकलते ये लोग वोट देने। अगर जरूरत पड़ी तो फिर से मास्टरी करूंगा। आओ मेरे साथ, आओ चलो। मुझे लगता है पापा ठीक कह रहे हैं। हमें भी वोट देने जाना चाहिए। वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, हमारा फर्ज भी है। और सिर्फ हम ही क्यों, हम अपनी सोसाइटी से भी सबको लेकर जाएंगे और जो लोग 18 साल के हो चुके हैं उन सबको भी। और इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग का प्रोसेस इतना इजी कर दिया है। बूढ़े लोगों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा और जो लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं उनके लिए घर बैठकर वोट देने की सुविधा है। तो फिर हम अपने फर्ज से क्यों पीछे हटे? हम सब वोट देने जाएंगे ही। मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई पसंद नहीं आया तो नोटा तो है ही ना, उसको दबाएंगे, लेकिन वोट देने जरूर जाएंगे। नैनीताल की छुट्टी कैंसिल, पार्टी कैंसिल। हम मिलते हैं महेश बाबू पोलिंग बूथ पे। उठो नींद से जागो रे, वोट डालने भागो रे। For the bright future, education is important. For the bright nation, voting is important. ऊंचाइयों से डर नहीं लगेगा, उड़ान भर के तो देखो। गर्व महसूस होगा, मतदान करके तो देखो। उंगली से चोट करेंगे, सब मिलकर वोट करेंगे। One life, live it. One vote, cast it. हम हो गए हैं 18 से पार, वोट देंगे अब हर बार। सुनो मेरे दोस्त, सुनो मेरे भाई, वोट करने में है देश की भलाई, मेरे भविष्य की आट है। मेरा वोट ही मेरी ताकत है। लोकतंत्र में हिस्सेदारी हम सबकी है जिम्मेदारी। Have a vision, make a right decision, vote। मत देकर राष्ट्रवाद में अपना कर्तव्य निभाए। एक ही समाधान, जनता का सही मतदान। जनता का सही मतदान। मौका है अनमोल, इसे ना यूं गंवाना, ना यूं गंवाना, ना यूं गंवाना। मौका है अनमोल, इसे ना यूं गंवाना। सूझबूझ
तो देवी सजनों, स्वाभिमान की ये काली स्याही ज़रूर लगाएं, अपना वोट ज़रूर दें। और ये हमारे कलाकार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ही प्रभावशाली और असरदार स्किट को यहाँ पर परफॉर्म कर हम सभी को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए अपना कीमती वोट ज़रूर डालें। सूझबूझ से यत्न करते हुए अपना वोट डालें। एक से एक मिलकर 11 बनते हैं और एक सुंदर भारत, एक नीले आसमान वाला भारत, खुला आसमान हम सभी चाहते हैं। और इसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, अपने घर से निकलकर अपना कीमती वोट डालना पड़ेगा। और इसी के लिए, इसी की तरफ इन सभी कलाकारों ने हमें एक उत्साहित किया, एक जागरूकता पैदा की। यदि आप अपने देश को बदलना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि अपने देश की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान दे, एक नए भारत का निर्माण हो, उसके लिए आपका भी योगदान बहुत बहुत ज़रूरी है। तो देवीय सजनों और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, जागो, उठो, मतदान करें, मतदाता बने और अपने सुंदर भारत देश के भाग्य विधाता बने। यह कलाकार हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे और बहुत ही बखूबी से इन्होंने यहाँ पर अपना संदेश हमारे समक्ष रखा, इंस्पायरिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ अस टू बी वोटिंग, एंड दिस वाज टुवर्ड्स द यूथ एंड द अर्बन apathy which we see, targeting that, especially arousing that sense of pride and responsibility among every voter, that is, vote matters, his vote counts. May I once again request the Honorable Commission and Sachin ji and our other dignitaries to please grace the dais once again. And now, ladies and gentlemen, we have the moment of the day, the exchange of Memorandum of Understanding between the Election Commission of India and Shri Sachin Tendulkar ji. I would like to request them to please step forward for the exchange. मैं निवेदन करती हूँ सचिन जी से और हमारे ऑनरेबल कमीशन से कि मंच के सामने आकर इस MOU का जो एक्सचेंज किया जाएगा। Ladies and gentlemen, just before coming here, this memorandum of understanding was signed. इस समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया था और यहाँ पर अब आप सभी के समक्ष यहाँ पर एक्सचेंज किया जा रहा है. And with that, ladies and gentlemen, today Sachin Tendulkar begins his new innings as the national icon of the Election Commission of India. Through joint initiatives, campaigns and messages, he will lend his iconic status to the cause of voter awareness, education, inspiring, motivating millions of people, especially the youth, to participate in the festival of democracy. सभी नागरिकों के लिए उनका संदेश निसंदेह हमारे महान राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में सक्रिय भागीदारी के महत्व के प्रतिध्वनित करेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. And now, ladies and gentlemen, I'm sure all of us are very eagerly waiting to hear the national icon of the Election Commission of India, Shri Sachin Ramesh Tendulkar ji. So without further ado, with all your applause, I welcome him to please address this august gathering, motivate us, inspire us, energize us.
नमस्कार। स्पोर्ट्समैन होना तो थोड़ा हाइड्रेशन का ख्याल रखता हूँ बात करने के पहले। राजीव जी, अनूप जी, अरुण जी, and the rest of the team members of Election Commission of India. मैंने पहले कहा था कि in the second innings of my life I'll continue to bat for India. So thank you for this opportunity. This room is full of people from different parts of India. यहाँ पे मीडिया भी है. Thank you very much for coming. But सबसे ज़्यादा important मैं कहूँगा हमारे future voters भी है. I can spot some students here. It's so nice to see you at this event. Your presence makes this a special event. We are the largest democracy in the world, and it is our prime responsibility to exercise our voting rights with due diligence. I've always made it a point to vote, along with me, of course, Anjali as well. But it was a touching moment to see when Sara and Arjun also joined us when they were eligible to vote. It is a responsibility which should not be ignored. मैं यही कहूँगा कि सभी का ध्यान होना चाहिए elections कब होते हैं and when is that window to go out and vote. When I started playing for India, I was only 16. We had players from different parts of the country, different religions, different castes, different cultures. They all were there in the dressing room. That was our strength because we were playing for a common cause, India ki victory. And that is what mattered to us. हम कहते हैं कि India is the youngest average age nation in the world. But when it comes to voting, वो responsibility एक है. Can we say that we are a responsible nation in the world when it comes to voting? The honest answer would be no. थोड़ा मुश्किल है accept करना. But ये program ने वो सारे examples दिखाए जो हमने देखे अभी, which happens, every time before elections. ऐसे ही कुछ सोचते हैं लोग. वो thinking change होनी पड़ेगी. I would, as an Indian, I would like people to say that India is, of course, the youngest average age nation in the world, but along with that, the most responsible nation in the world when it comes to casting your vote. October में Cricket World Cup is starting. Number of friends are talking about it. वो यही बात कर रहे हैं कि अच्छा इस दिन पे ये मैच है तो मैं I'm going to make myself available for that match. कैलेंडर में ब्लॉक कर दिया है वो दिन. वोटिंग के टाइम वो सुना ही नहीं देता. I'm hoping that वो वोटिंग के टाइम यही कहे मुझे. I've had the honor to represent the nation for many years. I was blessed to have a lot of love, support from everywhere, from everyone. Number of people turned up to watch us play. That feeling of being in the middle was surreal, unbelievable experience. वहाँ पे
people would support us. They also felt it was their responsibility to stand with us through our ups and downs. And all that came from within. Similarly, मैं कहूँगा कि when it comes to voting, they should also feel that responsibility. And that also has to come from within. And I urge everyone to do so. I think it is really, really important for our nation. We all want good things to happen to our nation. But उसके लिए effort लगेगा. Effort to go and vote. When you cast your vote, it is a reflection of what we all collectively want for our nation. और जब collective effort की बात करें, it reminds me of a test match that we played in 2001 in Zimbabwe. We won that test match. मगर उस टेस्ट मैच में there wasn't a single centurion, ना किसी ने 5 विकेट लिए थे. And why I'm giving इस टेस्ट मैच का example is, सारे प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं contribute किया था. There were good partnerships in batting, there were good partnerships in bowling, fielding भी अच्छी हुई थी. तो सभी इंडिविजुअल्स ने जो करना चाहिए वो किया था. There were no mega performances, but in the end, India won. And that is what matters. That is what we play for. हमारे लिए उससे बड़ी चीज़ कोई है ही नहीं कि जब भी हम ग्राउंड पे जाते हैं दिमाग में एक ही बात होती है कि जो टारगेट है वो टारगेट कैसे अचीव करें. In our dressing room, we discuss a lot, we plan a lot. There are agreements, there are disagreements also. But in the end, we know that all this is happening for the betterment of our team. We respect all individuals, उनके views, उनके opinions. चाहे opinions differ करे, but as long as the decision is taken in the interest of the team, that is what matters. अगर एक टीम को आगे बढ़ना है, तो I strongly believe we have to understand each other. We cannot be judgmental. आप जिस समय अपने colleagues को judge करने लगते हो, you fail to understand them. और टीम मीटिंग का मतलब यही होता है कि as a team you figure out what was wrong and not who was wrong. The easiest thing in life is to point fingers at each other और say कि उसने ठीक नहीं किया, उसकी ये गलती थी, forgetting that we all make mistakes in life. But if we are to move forward as a nation, we have to move together and every individual should take that responsibility. हमारे team meetings में भी, whether it was the senior most player or the junior most player, सभी को अपने views देने के लिए freedom था. But along with freedom comes a responsibility. यहाँ पे why I'm saying this is because we saw this program just now. Senior citizens हो या जो junior most citizen रहे जो eligible है voting के लिए, there is a sense of responsibility वहाँ पे. Freedom होना चाहिए. They should make their own choices, vote for whoever they feel appropriate. मगर do your due diligence. वो एक well thought process होनी चाहिए. It is not a mere formality that you turn up ताकि मैंने मेरी ड्यूटी की है and that is where things get over. It is not that. It is much, much more than that. It can have a positive impact on our nation. जब भी we have to
go out and play. Like how we have the freedom and the right to choose and vote for whoever we want. हमारे टीम में भी approaches अलग होते हैं. There are few batters who attack more. And then there are few batters who are little more cautious. There are some players who like to run hard between the wickets. But in the end, everything is happening for Team India. So, whenever we decide to vote, we should keep one thing in mind, that whatever we are doing is for the betterment of our nation. अगर मैच जीतनी है, तो I'm very clear, एक-एक रन जो बैट्समैन बनाता है, या एक-एक विकेट जो बॉलर निकालता है, or those important stops while fielding, they contribute, they add up. Similarly, मैं यही कहूँगा कि when we think of a country that we desire, every vote is going to matter. हम जब ECI की बात करते हैं, तो कुछ नंबर्स मेरे दिमाग में आए. 600 million voters were there last time. उन्होंने 10 million personnel और policemen deploy किए थे last time. I know 600 million sounds a big number, मगर हमारे population का अगर percentage निकाले, तो I feel that can be bettered without any doubt. कि हम ड्रेसिंग रूम में यही कहते थे, जो भी रन बनाए, जितने भी बने, हम यूज्ड टू ऑलवेज से डबल इट अप. तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि whatever we can improve upon that number, we should continue to do that. Also, it's heartening to know कि polling stations are at every 2 kilometers away from given any residence in our country, which is a mammoth job. And I was just thinking of this Tashiganj, जो 15,000 feet पे polling station है. आपने गिर के बारे में बात की. I was also there, and they told me about it. उसको कुछ समय हो गया, but they told me कि यहाँ पे भी polling station है. So 15,000 feet पे होता है, which I am pretty sure कि that must be the highest polling station in the world. उसके लिए a lot of efforts are required. मगर मैंने पार्टनरशिप के बारे में बात की. अगर एक ही एंड पे बैट्समैन बैटिंग करता रहेगा और सामने कोई नहीं रहेगा, तो there won't be any results. प्रोसेसेस तो होते हैं, मगर प्रोसेसेस सही होने के बाद ही रिजल्ट्स लगने लगते हैं. The non-strikers are sitting right here in front of me. There are future voters. I'm so happy that you are here. आप भी एम्बेसडर बनो, आप भी मैसेज स्प्रेड करो फ्रेंड्स के साथ. Take that initiative. It's good for our country. And like I said, ये बिल्कुल मत सोचो कि मैंने वोट नहीं दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है. फ़र्क ज़रूर पड़ता है. अपने कंट्री के लिए ज़रूर जाइए और वोट कीजिए. Thank you very much once again. Jai Hind. Thank you very much, Sachin sir, for inspiring and motivating everyone. And as you said, every vote counts. और यदि हर एक नागरिक, हर एक वोटर ये सोचकर वोट करने जाए कि ये उसका राष्ट्र धर्म है, उसका कर्तव्य है, और टीम वर्क does matter in shaping a beautiful country, I'm sure we are going to be building a beautiful country and a progressive nation. Thank you so very much. And may I now request you, Sachin sir, to also sign a bat enshrining this collaboration and partnership between the Election Commission of India. You may I request you also, if you can get the bat here, and also request the Commission also to please sign. So, ladies and gentlemen, enshrining this beautiful relationship, collaboration, partnership, which we have built, which we have cemented
with Sachin sir, now being further engraved on this bat. And we're sure, sir, the way you have played cricket with the determination, the commitment, the responsibility, it definitely inspires many people that sense of responsibility and dedication, commitment to go out and vote. और अब और अब एक बार पुनः सचिन जी को अपना आभार व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करती हूँ कमीशन से कि वह शॉल और एक साइटेशन भेंट करें. मैं निवेदन करती हूँ हमारे ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और कमीशन के सभी सदस्यगण से कि ये शॉल से सम्मानित करें. हम सभी की भावनाएं इस शॉल में हैं. एक बार पूरी सम्मान के साथ उनका धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, हमारी कृतज्ञता. और अब मैं हमारे माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ इस ऐतिहासिक गठबंधन पर उनके विचारों के लिए और उनके मार्गदर्शन के लिए. भारत रत्न अवार्डी मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर, Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji, Honorable Election Commissioner Shri Arun Goel ji, my all ECI family members, friends from media, and as Mr. Sachin mentioned, the non-strikers, but most of them are strikers as well. The students here, very warm welcome to all of you. अभी जो स्किट हमने देखा उसमें हम सुन रहे थे तो नन्नू को क्या चाहिए, चुटकी भर चांदनी और तारों का साथ चाहिए, नीला आकाश चाहिए. और ये कहाँ से आता है? ये उसकी इच्छा है, ये आता है उसके वोट देने से. और अगर इसको फिर से लिंक करें तो जो हमने एक सॉन्ग आपको दिखाया मैं भारत हूँ, तो उसका जो अंतिम शॉट था वो एक स्पेस क्राफ्ट का था. तो वो स्पेस क्राफ्ट क्या था? अगर उसको माने वो चंद्रयान था 3, तो वही नीले आकाश की तरफ जा रहा था. और वो आज शाम को जिसका हमें इंतजार है, वो लैंडर को, वो पहुंच तो चुका ही है वहाँ, जो अचीवमेंट होना था उसका मेजर अचीवमेंट तो हो चुका है, लैंडर को घुमा भी चुका है. और आज चंदा मामा पर वो रोवर को भी शाम को उतारेगा और जो ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट डेमोक्रेसी है उसके इम्प्रिंट वहाँ छोड़ेगा उसी चंदा मामा पर जिसके साथ हम जिंदगी भर रहते रहे. My friends, ECI associates itself with very renowned individuals who are icons in their own field, professionally extremely high. And it's a proud moment for us to associate with Mr. Sachin Ramesh Tendulkar and his zeal and enthusiasm for working with us with this passion. When we approached him, he's working for us absolutely pro bono, and the passion which he had, and which he mentioned also that in the second inning, he wants to contribute in deepening the democracy and strengthening the democracy.
We must salute this, and it's a big applause for you to have come here. Today, we all have gathered here to commemorate and celebrate the beginning of what we hope will be a long inning and a long partnership with cricket legend Bharat Ratna Awardee Shri Sachin Ramesh Tendulkar, the ECI's national icon. And in this inning, we do not want him to contribute runs as such. What we want him is to encourage millions and millions of voters who are at his fingertips. If he moves the finger, the voters come out to the polling stations and vote. That's the strength he has. And therefore, we want him to bat on that. I remember very vividly 15th November 1989, when he walked in Karachi as a debut. And the rest of it thereafter is history. So today, he is again creating a history in his second inning. And believe me, and we are sure of it, when the next 5 rounds of elections come and when the 2024 elections come, by the time, with his appeal and with all the efforts which we are making, we'll be really very proud to have far more substantially increased voter turnout. That's what is our belief with his involvement. Conversations, as you know, about cricket are common in every home, office, everywhere. And this increases, of course, during World Cup and IPL. In 2023, ICC's Men's Cricket World Cup and Parliament elections in 24, both are coming. So please tune in, as you were saying, book your schedule, book your diary, to not only watch the ICC, but also vote in the elections, the schedule of which you will know. Let me admit that just as the fervor of cricket matches brings together fans from all walks of life, elections also utilize and unite citizens in the democratic process, allowing them to participate and voice their opinions. And it is this voicing and this participation in the elections which keeps our democracy strong and which leads to resolution of all kinds of disputes, all kinds of conflicting views through the process of consultation, through the process of the democratic exercise of rights. And that is how we are moving year after year in resolving all the issues of the country, and that's what the beauty of the democracy is. I hope that the hearts that beat and pulsed for Shri Tendulkar and Team India in countless stadia across the world will now beat for the elections. Shri Sachin Tendulkar, the cricket legend of India, actually entire world, let me say, stands as a resounding youth icon whose influence exceeds boundaries and generations. And beyond his sporting prowess, Shri Tendulkar's humility and commitment to the social and national cause have endeared him to the hearts of the young and old alike. The ethical standards which he has set for himself is a thing which we all kind of need to follow. No digression except then what one is supposed to do. Sports, sports, sports. One hasn't seen in life any behavior which is deviant than other than the focus on the sports, the work which he decided for himself. My friends, today we may have overcome many known physical challenges on an unhindered celebration of electoral festivities, but lately we have been facing attitudinal and behavioral challenges, and predominantly in the urban and amongst the youth. I'm sure the kind of mastery and command with Sachinji has, it would be a great motivation for everyone and persuasive value which he has to move them out of their homes to come for voting. Urban apathy in pool participation generally, as we understand, refers to phenomena where residents have
have a lack of interest or motivation or engagement in the voting process, as was shown in the skit also. There is also a perception of the inefficacy of a single vote. क्या फर्क पड़ता है? एक ही तो vote है. No, it's not one vote. You can remember in the cricket parlance the importance of one vote. We used to watch with far more greater anxiety when Sachin used to bat after 90. One run was as important as even much more than the 90. So this is the power of one vote as it was the power of one run. In 2019 general elections, it was 67%. And as he rightly mentioned, it still leaves close to one-third who are not participating, who are our missing voters. We are making our electoral roll as pure as possible to weed out the possibilities of duplications and others. So what is left now is to motivate and bring those voters out to vote in the festival of democracy. And if I again explain the mosaic which we have in the voter list, it's from 18 years to 100 plus. It's not there many places in the world. You have 18 to 19, we have 19 to 25 cohorts, we have 25 to 30, 40, 50, 60, above 80, PWDs, transgender, octogenarians, above 100. It's a beautiful mosaic which we have in this country, which represents the democracy and the deepening. With emphasis on inclusion and as a human face, we are now making extra effort in the outreach to go to wherever there are differential vulnerabilities in terms of either registration of voters or in terms of facilitation for vote. If there is a geographical disability or a vulnerability or a social or economic or whatever kind, we are there to kind of go. Even if there is one voter and we have to set up a booth, we will set up a booth. We'll go to everybody's house who is 80 plus if they so wish, or a person with disabilities who is 40% plus disability to fetch his vote if he is not interested or cannot come to the booth. But believe me, many wants to come to the polling stations to participate in the festival of democracy. And that's the shining example where the youth and urban areas need to just follow and see if they can come to vote, why can't we come to vote? The ECI has, just to tell you about this, our plan, what we are doing now, we are adopting a new approach this time. We have identified constituencies and the booths where percentage of voting has been less. And this we are calling a turnout implementation plan. So it's a 360-degree profiling of those booths where voting is less we have done. And we have rolled out a TIP which is called the turnout implementation plan and identified constituencies and made the DOs responsible for looking for the reasons, analyze the factors as to why voting is less, motivate them, persuade them, do outreach action much and more. The moot point is that we are not doing it generalistic, one solution fits all. In different geographies, in different regions, in different backgrounds, there may be different reasons for low turnout. We are identifying those constituency-wise and going to act on them in the language and in the manner they understand and we can explain to them. So that's what is the TIP, and it's a bottom-up approach which we are following. I hope that this collaboration with Mr. Tendulkar as ECI's national icon, and at this crucial juncture when we are going to have 5 elections now, and with the motto of no voter to be left behind, we will achieve success. We are sure that his famous attacking style of cricket will be replicated and his action will be sustained along with the ECI in continuously motivating the voters. And I'm sure we will move certainly beyond 67% with a far more inclusive voting next time, far more women, PWDs, vulnerable tribal groups, whosoever wants to, is missing from this action. I'm sure we will achieve more than 67%, substantially higher. और इसमें
अपनी बात को अंत करना चाहूँगा इस तरह से कि प्रयास तो हम करते ही रहेंगे, जो मैंने कहा कि 67% से ऊपर हम परसेंटेज को अचीव करें। जो भी वोटर्स के लिए नहीं निकल पा रहे हैं उनको हम मोटिवेट करें। और इस प्रयास के लिए हमारा क्या मन में मेरे आता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम पहुंच के रहेंगे 67 से पार। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और खोजोगे अगर तभी तो रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की तो फितरत है खुद चलकर नहीं आती। थैंक यू वेरी मच Sachin ji once again. We look forward to your continued sustained engagement with us, and I am sure that this second inning, you have many more innings elsewhere, but this second, third, fourth, whatever inning would see the increase in the percentage, and that would be another laurel in your cap, combinedly both of us. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your insightful views on this collaboration and further motivating and inspiring everyone, the strikers as well as the non-strikers. और मंजिलें ज़रूर मिलेंगी यदि हम कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के अंत में अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री संतोष अजमेरा जी को, निदेशक स्वीप। उनसे निवेदन है धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। Honorable Commission, our esteemed guest for today, Shri Sachin Tendulkar, senior officers of ECI, my friends and colleagues, and all the attendees present today. On behalf of Sweep Division at ECI, I would like to take this opportunity to thank cricket legend, Master Blaster, the god of cricket, Shri Sachin Tendulkar, for collaborating with ECI and graciously accepting the role as a national icon. I am sure, Sachin sir, your contribution as a national icon would be highly inspiring for our voters, the way it has inspired the nation with your cricket. It would help us in further enhancing voters' participation in our democratic process. Your charisma, your energy, and your appeal will make our voter education program not only impressive, but also highly impactful for voters at large. Despite your busy schedule, thank you, sir, for your kind presence today. It has really inspired us all. I would like to thank the Honorable Commission for introducing Shri Sachin Tendulkar in our ECI family. The idea of onboarding Shri Tendulkar as national icon came from the Honorable Commission first. Today we have with us most active and supportive commission headed by Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar and Honorable Election Commissioners Shri Anup Chandra Pandey and Shri Arun Goyal. The commission has always been very supportive for the cause of ensuring ease of voting for our voters and ensuring their increased participation in the electoral process. Honorable Commission, as the head of the family, is a constant source of inspiration and guidance for all of us. It is the Commission which is behind the success of elections, electoral processes, and its recognition not only in India, but at the global stage. Thank you, sirs, for your valuable time, presence, and continuous guidance. Further, I would like to thank our senior officers, including Senior DEC Dharmendra Sharma, Nitesh Vyas, DECs Ajay Bhadu, Hridesh Kumar, R.K. Gupta, Director General Narayanan, DG Neeta Verma, for your kind guidance and motivation towards conduct of not only this event, but various sweep activities from time to time. No program of this magnitude could be organized without a leader present on the field. Our Deputy Election Commissioner Manoj Sahu has led the entire team of officials at the ECI to make sure the things fall in place the way they are planned. He is a wonderful team person and a motivator. Thank you, sir, for making this event a grand success. I would like to appreciate the wholehearted efforts and support of tireless efforts and support of our entire team at the Sweep Division, who always stand together to make things work in a true team spirit. I would also like to thank our protocol, media, and establishment divisions for their unwavering support and continuous help towards the successful conduct of this event. It is important to recognize the contribution of Sachin Tendulkar's sir's team, including Ms. Bhavisha and Mr. Atul, who both are present here.
Sachin sir, you have a wonderful team of highly motivated and highly positive persons who understand things in the correct perspective. Thank you, Bhavisha. Thank you, Atul, for taking our request to Sachin sir and facilitating every small communication as a wonderful bridge between us. I would like to thank our partner, Director, National School of Drama, Ramesh Gorsa, and Coordinator, Suman Vaidya, and his entire team for who have arranged today's small play, Kali Sahi, on addressing the issue of youth and urban apathy. Also, CEO Delhi and his team for the presence of young voters in the auditorium. Also, thanks to all young voters, your enthusiastic participation in today's event has made it really successful. Media is a friend and ally for ECI. I would like to thank media persons for your wonderful presence today and taking our message to our electors. It is also important to recognize the presence of Delhi Police and their continuous support in coordinating the entire event. Thank you, Delhi Police and their entire team. Once again, thank you to the Commission for your continuous support, and thank you, team, for your relentless efforts. I'd like to end my vote of thanks with 2 lines. हम वो कर सकते हैं जो आप नहीं, आप वो कर सकते हैं जो हम नहीं, हम मिलकर वो कर सकते हैं जो शायद कोई और नहीं. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Okay, now we'll have a group photograph. There are 4 group photographs. First with Sachin sir and the Commission. आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ, प्लीज़ आप अपने स्थान पर ही बने रहें.